हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में रह के स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हम केमिस्ट्री में एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। वी कंप्लीटेड ऑलरेडी अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट सॉल्ट्स। वैसे मैंने आपको सॉल्ट्स पे एक दो इंटरेक्टिव लेक्चर भी दिए हैं, ठीक है, but now I am sending you full video on about salts and its classification up to 10th level, as well as including NTSC and some foundation level. Okay, so let's start. बेटा आप सभी जानते हो salts are what? Basically salts are ionic compounds. Salts are ionic compounds which are generally formed by the neutralization of acid and base. By the neutralization of acids and bases. That is by the acid-base reactions, when acid neutralized to bases or base neutralized to acid, and then we get salts. For example, when acids like HCl treated with the base like NaOH, we get NaCl in water, and because this is the acid, this is the base, these both neutralize to each other. That's why this reaction is also known as neutralization reaction. This is the neutralization reaction. ठीक है, बशर्ते कि यहाँ पे जितना भी बेस है वो सारे के सारे एसिड को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हो. एसिड एंड बेस, बेसिकली व्हाट हैपन इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में acid has tendency to give H plus ions, base has tendency to give OH minus ions, and when these two combine together then the water is formed. So you can say, कोई आपसे पूछे कि define neutralization reaction, so you can say neutralization reaction is the reaction in which particular amount of acid, you can say per mole or per equivalent, better word is per equivalent, when per equivalent acid is neutralized by the per equivalent base, salt and water is formed. It is the neutralization reaction. But another way you can say neutralization reaction is a reaction in which 1 mole H plus ions neutralized completely to the 1 mole OH minus ions to form water. Okay, so this is the neutralization reaction, and remember, every neutralization reaction is an exothermic process. जितने भी बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं ये सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं. दैट मीन्स व्हेन एसिड न्यूट्रलाइज टू बेस और बेस न्यूट्रलाइज टू एसिड और H plus ions combined with OH minus ions to form water, some heat is released. ठीक है, and this heat is also fixed, and it is nearly minus 13.7 kilocalorie per mole, basically per equivalent. This is the amount of heat released during this reaction or during this reaction. It is also known as heat of neutralization. ये जो चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा सा NTSC के लिए बताना शुरू कर दिया. Otherwise in the 10th level you have to define just neutralization reaction. You have to define formation of salts. Okay. This is also known as heat of neutralization. Neutralization is the process or reaction occurring. हो सकता है बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि what happened when H2SO4 treated with like NaOH or NaOH ही ले लो, take H2SO4. If you take H2SO4 you have to need a 2 NaOH because H2SO4 gives 2H plus ions on ionization. So for the neutralization of 2H plus we needed 2OH minus, and after the reaction we get Na2SO4 plus water, or from this we get 2S2
So for this reaction, the amount of heat released would be double of this one. Listen carefully. Amount of heat released during the reaction, this one, amount of heat released equal to the double of this one, because here 1H and 1OH combine to give water, and amount of heat released is this one. Or 1 mole HCl neutralized to the 1 mole NaOH, the amount of heat released is this one. In this case, the amount of heat released is a double of this one. Amount of heat, ठीक है ना? It's a extensive property. It depends upon amount. अगर आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो निकलने वाली हीट वो भी बढ़ती रहेगी. But heat of neutralization is defined for the per mole. So heat of neutralization remains same in both cases, but in the heat of the reaction, I am talking about heat of the reaction. Heat of the reaction becomes double as in this case. Okay. Now, this is the generally formation of salts. If we hydrolyze the salt, अगर आप किसी salt को water में add करते हो, now the reaction is called hydrolysis of salts. अब ये चीज hydrolysis of salts कहलाती है. Salt treated with water to give return back acid and base. और कुछ केसेस में तो बेटा ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है. ठीक है, जब हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो एसिड एंड बेस बनते हैं. दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. सो यू कैन से हाइड्रोलिसिस of salts is reverse reaction of neutralization. Neutralization reactions का reverse होती है hydrolysis of salts. इतनी बात समझ गए बेटा? hydrolysis of salt, that is when salt treated with water, this is a very important reaction. इस रिएक्शन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास सॉल्ट है उसका टाइप क्या है. सॉल्ट्स को बेटा बहुत ही कैटेगरी में डिफाइन करा गया, जैसे जनरली कि कौन सा एसिड यूज हो रहा है, लाइक क्लोराइड्स फैमिली, दैट मीन्स HCl इज यूज्ड एज एसिड एंड बेस आर डिफरेंट. हाइड्रोक्साइड फैमिली, मतलब जो बेसिस हैं वो OH वाले, NaOH लाइक. ठीक है, सो HCl वाले क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, nitrates, these are the families of salts. We can say what type of salts are there. These are the chlorides, that means acid used as HCl. Sulfates, ठीक है, that is acid used as H2SO4. Nitrates, that means acid used as HNO3. Carbonates, that is the acid used as H2CO3. Phosphates, that is acid used as the phosphoric acid. Oxalates, that is the acid used as oxalic acid. There are a number of families of the salts. Okay. In case of chlorides, we can write example NaCl, CaCl2 like this. In case of sulfates, we can write like Na2SO4, CaSO4. कुछ बेस भी होंगे, यहाँ पे NaOH ले लो, यहाँ पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स ले लो. In case of nitrates, NaNO3, CaNO3 whole twice. In case of carbonates, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, बाइसल्फेट्स, बाइसल्फाइड्स, फॉस्फेट्स लाइक सोडियम फॉस्फेट, these type of salts. Oxalates, calcium oxalate, CaCO whole twice. Okay, so there are the number of families. This is on the basis of acids, जिनमें HCl है तो क्लोराइड्स हो गए. ऐसे ये मैंने कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बताई आपको. सिमिलरली देयर आर सम अदर फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस. बेसिस के केसेस में भी कि ये कैल्शियम टाइप के हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट्स हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट्स हैं.
Basically, in the periodic table, alkali and alkaline earth metal hydroxides are strong base. Okay, so when a strong base is treated with any acid, then neutralize it, and after the neutralization, salt is formed. Okay, so these are some categories of salts on the basis of their families of the acids. What type of acid is used here? Now, on the basis of their radicals, ठीक है, cations, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, उसमें रेडिकल किस टाइप के हैं, या फिर उसमें मेटल किस टाइप का है, या उनके कॉम्बिनेशन में सॉल्ट्स में जब आप एसिड और बेस की रिएक्शंस करते हो, एसिड बेस रिएक्शंस, then salts can be categorized in 4 types. That is the salt of weak acids and strong base. ठीक है, salt of weak acid and strong base, that means this is the salt formed by the combination of weak acid and strong base. Weak acids we discussed already, like acetic acids, formic acids, ठीक है, HF. Strong base like NaOH, KOH, calcium hydroxide, like this. And when these two combines together, any one of these two, then we get a salt of this category. For example, if I have to say acetic sodium acetate is what type of salt, you have to say it's a salt of weak acid and strong base. Potassium formate, this is the potassium formate. What type of salt is this? Strong acid and a weak acid and a strong base. CaF2, what type of salt is this? Strong base and weak acid. And such type of salts like this are in this category. But when these type of salts undergo hydrolysis, जब आप इनको hydrolyze करते हो, or when added in water, remember the resulting solution is found to be basic. Their resulting solution is found to be basic. It is not due to the given of OH ions. Its basic nature is not due to given of OH ions in the aqueous solution. Their basic nature is due to presence of a strong base and weak acid. You know, it's a weak acid, it's a strong base. So what is the effect overall? इफेक्ट तो स्ट्रॉन्ग का ही होगा बेटा. जैसे आप इसको इसमें डालोगे पानी में डालते ही NaOH बनेगा और ये बनेगा. ये लेसर आयोनाइज्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग आयोनाइज्ड होता है. जैसे आपने इसको पानी में डाला, ये दोनों बन जाएंगे. ये वीक आयोनाइज्ड होगा, it gives lesser H plus ions and it gives greater OH ions in the aqueous solution. Now resulting solution will be basic. That means the pH of their aqueous solution is found to be greater than 7, or their pOH is found to be less than 7 for this type of category. This is the salt of weak acid and strong base. Now second category of the salt by the reaction of acid and base, it's a salts of weak base and strong acid. इस टाइप के सॉल्ट्स हो, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट्स बने हों. फॉर एग्जांपल वीक बेस यू कैन टेक एज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, even magnesium hydroxide, lithium hydroxides. These are considered as weak base as compared to other hydroxides of alkali and alkaline earth metals. Alkali metals are the first group elements: lithium, sodium, potassium, cesium, francium. And alkaline earth metals are the second group elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Okay, so these are generally considered as weaker bases as compared to the other hydroxides of alkali and alkaline earth metals. Strong acids अभी आपने पढ़े, like HI, like HCl, like HNO3, like H2SO4. ठीक है, these acids are somewhat of the strong acids, generally mineral acids. So these are the strong acid in their aqueous solution, these are the weak base in their aqueous solution. But when we react
इनको आप आपस में किसी को भी किसी से रिएक्ट करा दो, यू गेट अ सॉल्ट ऑफ सेकंड कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. Definitely the resulting solution should be acidic, and remember this acidic nature is not due to given of any H plus ions. What is the type of salt? BeCl2, AlCl3, aluminium sulfate, ठीक है, magnesium nitrate, all these type of salts are come in this category, and their pH is found to be less than 7 and their pOH is found to be greater than 7, because the resulting solution is acidic. That means when such type of salts are added in water or undergo hydrolysis, we get a weak base and a strong acid. If in the resulting solution we get a weak base and a strong acid, so resulting solution will be acidic. Okay, this acidic nature is not due to the given of H plus ions. When you added this one in water, you get BOH whole twice and HCl, and this is only due to the presence of a strong acid in its aqueous solution, which is more ionized, which is more dissociated, which give more H plus ions, which give H plus ions frequently, which is almost completely ionized in the solution as compared to the weak base. Okay, now third category, इसमें जो थर्ड कैटेगरी है बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में, ये है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस. इस टाइप के जो सॉल्ट्स होंगे जिनमें वीक एसिड और वीक बेस होंगे. वीक एसिड्स अगेन लाइक फॉर्मिक एसिड, वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, weak acids like oxalic acid. Okay, and weak acids, HF is also considered as weak acid. Among halogens, HF, HCl, HBr, HI, these are the halogen acids. इनमें बेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता है, ये वीकेस्ट होता है. ठीक है, अगर आपको कभी ऐसे फाइंड आउट करना हो कि कौन सा वीक और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी दिए हों, तो आप देखा करो कौन इजीली H को ब्रेक कर सकता है. H और I की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है, H और I की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, ये बहुत आसानी से ब्रेक कर जाता है. दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, साइज छोटी है, तो F को पकड़ के रखता है, इजीली रिलीज नहीं करता है. ठीक इसी तरीका से अगर कभी आपको जैसे HClO4, HClO3, HClO2 इस टाइप के एसिड्स दिए हों तो एसिडिक नेचर ऐसे बढ़ता है. ठीक है, जितने ज़्यादा फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाता है. ये भी आपको कभी किसी पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा, बट फिलहाल अभी देखिए, दीज आर द वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस लाइक BeOH whole twice, MgOH whole twice, AlOH whole thrice, these are the weak bases. ठीक है, ये इजीली OH नहीं देते, ये इजीली H नहीं देते. जब आप इनको डिसॉल्व करते हो पानी में तो डिसोसिएट दोनों होते हैं, बट दोनों की डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम एसीटेट लाइक सॉल्ट, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज शुड बी कंसीडर्ड एज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. बेटा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इस टाइप के सॉल्ट्स का जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो कैसा होगा. क्या इनका रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा, क्या इनका रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा. एक बार तो हमें लगता है कि इनका रिजल्टिंग सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, बट रिमेंबर रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स इज नॉट neutral, or is not neutral is not a correct statement. It may be neutral, it may be acidic or may be basic. It depends upon the relative strength. देखो दोनों ही वीक हैं. जैसे कोई दो फाइटर हो, दोनों ही वीक हैं, आप उन्हीं को लड़ा रहे हो. ठीक है, हो सकता है कि उनकी जो फाइट है वो टाई हो जाए, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा. ठीक है, सो इस टाइप के सॉल्यूशन का जो pH है 7 भी हो सकता है, लेस देन 7 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, बट इट इज मोस्टली ये इनका जो pH है नियरली 6.8 से लेकर के 7.2 के बीच में ही रहता है. मतलब जो न्यूट्रलिटी पॉइंट है 7 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
उससे थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में व्हेन वी हाइड्रोलाइज दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स इन द वाटर. Now the fourth category of the salts of strong acids and strong base. यहाँ पे बात बहुत क्लियर है. जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, that is give H plus ions frequently. Strong base are also completely ionized, that is give OH ions frequently. Okay, so we can say such type of salts, strong acids like HCl, HI, HNO3, H2SO4, HClO4. आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बिकॉज आई राइट हियर द नेम इन TSC and some other topics. HClO4, this is the HClO4, this is the strongest individual acid. HClO4 is the strongest individual acid. अगर ये सिंगल एसिड है तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिल नहीं सकता. However, if you talk about mixture, HClO4 the strongest individual acid. If you talk about mixture, then you know concentrated HCl and concentrated HNO3 in 1:3 ratio, that is make aquaresia. This is the very strong acid, but individually HClO4 is the strongest. Strong base NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ठीक है, CaOH whole twice, SROH whole twice, BaOH whole twice, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं. वे इनकी भी ना बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है. इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक है, इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक है. जब आप इनको आपस में किसी को भी किसी के साथ कंबाइन करते हो, then you get a salt of a strong acid and a strong base. And the resulting solution of such type of salts have pH neutral. ऐसे salts का pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 ही आता है. Example of such type of salts NaCl, Na2SO4, ठीक है, BaSO4. There are so many examples you can write. It may be the different families, belongs to the chlorides, maybe sulfates, maybe nitrates, but pH of such type of salts will be 7 or pOH will be 7. Neutral होंगे ये. Okay. इसके अलावा बेटा आपने कुछ salts ऐसे भी पढ़े हैं जो डायरेक्ट क्लासीफाई करते हैं कि ये किस टाइप के salts हैं. जैसे आपने पढ़े नॉर्मल सॉल्ट. Normal salts like neutral salts. अब जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया. These type of salts are the neutral salts. कई बार आपको इन्हीं में कहते हैं you have acidic salt. तो जब भी एसिडिक सॉल्ट की बात आएगी दो कैटेगरीज में आएगी. या तो ये सॉल्ट ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना है वीक बेस पर, या फिर ये सॉल्ट ऐसा है जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी, रिएक्शन के बाद भी जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमें H प्लस आयंस एक्स्ट्रा दे दे, लाइक दिस. ठीक है, ये चीज है एसिडिक सॉल्ट. मतलब H प्लस आयंस भी दे सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. Similarly, there may be a basic salt like MgOHCl. That means when we dissolve it in water, it give Mg2 plus and give some hydroxide ion. जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, और जो किसी भी टाइप के कोई भी आयन्स नहीं देगा, सिर्फ कैटायन और एनायन देगा, उन्हें हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे. उसे न्यूट्रल कहेंगे जिससे किसी कोई भी आयन ना मिले. आगे बात समझ में.
तो बेटा ये नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉल्ट्स है एसिडिक, और इनमें किसकी क्या बेसिसिटी है, एसिडिटी है, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. pH of the salts depends upon the neutralization. Okay, now there are some common salts. Examples, salts कैसे हैं, उनकी reactions कैसे होंगी, like what are the use of NaCl, ठीक है, NaOH. ये कुछ salts है, इनके बारे में फिर अलग अलग कैटेगरीज में आपने पढ़ना होगा. Types of salts we have to study about NaOH, we have to study by bleaching powder, CaCl2, MgCl2. What is the uses of sulfates, what is the use of caustic salts. Okay, so I will send in the next video. Please watch once about salts, and whatever doubts जो आपको लगे कि doubts है, and then you can ask and you can call me, you can message me, but once read the book and watch the video. ठीक है, इसके बाद फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट का मैं आपको एक टेस्ट बना के दूंगा. तब तक आप इस वीडियो को आज देखिए. संडे है, आप घर पे हैं. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.